Jai Vishnupada Paramahamsa Brihiraj Acharya Asto Tarasadashi Srimad. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Brihiraj Acharya Asto Tarasadashi Srimad. His Divine Grace Srila Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Shri Shri Radha Giridhari Ki Jai. Shri Jagannath, Shri Baladev, Shri Bhakti Subhadra Maharani Ki Jai. Shri Shri Gauritai Ki Jai, Shri Prabhupada Ki Jai, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, Shri Shri Guru and Guranga, Shri Prabhupada Ki Jai. It's a book? Yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So read from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 6, text number 22, I believe. So that's the verse, is there? Okay. Parashyatam Nandaya Satya Paryastam Nandaya Satya Snana Punya Tarodaya Snana Punya Tarodaya Vilokya Bhuteshu Kirim Vibudha Vishmayanyayo Payastam Nandaya Satyaha Snana Punya Tarodaya Vilokya Bhute Shakirim Vibudha Vishmayam Yayo. Please chant.
Ladies? Stilted water? Huh? Stilted water? Word meanings paryastam, surrounded. I think so. I'll say English, you say in Hindi. We'll do all three. Okay. Nandaya by Nanda. Satya of Sati. Snana by the bathing. Punyatara especially flavored. Udaya with water. We'll do all four. I'll say. Vilokya after serving. Hindi too, huh? Bhuta Isha of Bhutesha, the Lord of the ghosts, Lord Shiva. Girim, the mountain. Vibhuta, the demigods. Vishmayam, wonder. Yayu, obtained. Translation in English first. There is a small lake named Alakananda in which Sati used to take her bath, and that lake is especially auspicious. All the demigods, after seeing the specific beauty of Kailash Hill, were struck with wonder at the great opulence to be found there. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada Ki Jai. According to the commentary called Sri Bhagavata Chandra Chandrika, the water in which Sati used to bathe was Ganges water. In other words, the Ganges flowed through the Kailas Parvata. There is every possibility of accepting such a statement because Ganges water also flows from the hair of Lord Shiva. Since Ganges water rests on the head of Lord Shiva and then flows to the other parts of the universe, it is quite possible that the water in which Sati bathed, which was certainly very nicely scented, was Ganges water.
तब ब्रह्मांड अन्य भागों में रहता है। अतः बहुत कुछ संभव है कि जिस जल से सती स्नान करती थी और जो अत्यधिक सुवासित था वह गंगा जल ही था। Om Ganatami Andasya Janan Anjana Salakaya Chakshtu Om Manitamina Tasmai Shri Gurve Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Didati Swapadantikam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. It's the power of the Maha Mantra. You close your eyes, there's nobody sitting here. There's only a few people there. You open your eyes after chanting, there's so many people here. ये महामंत्र की शक्ति है कि जब आप आँख बंद करते हो महामंत्र का उच्चारण कर रहे हो तब सामने कोई नहीं बैठा होता है, थोड़े लोग होते हैं और जैसे आप आँख खोलते हो इतने सारे लोग आ जाते हैं। So thank you for giving me the opportunity to speak. धन्यवाद ये अवसर हमें दिया बोलने का श्रीमद् भागवत। Thank you for maintaining this beautiful temple for the pleasure of Shri Shri Radha Giridhari and Srila Prabhupada. इस सुंदर से मंदिर को सुव्यवस्थित ढंग में रखने के लिए श्री श्री राधा गिरधारी और प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Among many other wonderful features of this temple, इस मंदिर के बहुत सारे अच्छे गुणों में से एक I think it's the only place in ISKCON that I know of where you can go to Mangal Artik in the morning. मैं मंदिरों में से इस्कॉन के जो मंदिर है उसमें से बस एक ही को जानता हूँ जिसमें आप सुबह मंगल आरती में जा सकते हो। See the Pujari doing the Artik for the deities. आप पुजारी को देख सकते हो कि वो भगवान की आरती कर रहे हैं। And in the same day, the same Pujari perform an operation on you across the street. और उसी दिन वही पुजारी सड़क के उस पार कोई ऑपरेशन कर रहा है। I personally have that experience here. तो मैंने वैसा अनुभव इस स्थान में। There's a lot of special Shakti here. तो इस मंदिर में एक विशेष शक्ति है। So this section of the Bhagavatam is describing the beauty and the area of Kailash, the home of Lord Shiva. तो इस भाग में श्रीमद् भागवतम के कैलाश जो भगवान शिव का धाम है उसका ऐश्वर्य और सुंदरता का वर्णन है। So we know in the previous chapter there was this great offense committed by Daksha and his followers. पिछले अध्याय में हमने जाना कैसे दक्ष ने और उसके अनुयायियों ने बहुत बड़ा अपराध किया, Which led to so much destruction and so much suffering. जिससे इतना विनाश हुआ, इतना लोगों को दुख मिला। So here, what we're reading now is the demigods, they've approached Lord Brahma, realizing we made a big mistake. तो यहाँ पर जो देवतागण हैं वो ब्रह्मा जी के पास आ रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की And they're asking his advice. और वो उनसे सुझाव मांग रहे हैं। So he directs them, he says, you should go and pacify Lord Shiva. तो उनको निर्देशित करते हैं कि आप शिव जी के पास जाइए और उनको शांत करने की कोशिश करें। So they're on their way to visit Lord Shiva, and there's multiple verses describing how beautiful it was, the place where he stays. तो जब वो शिव जी के पास जाते हैं कुछ लोग आते हैं जिसमें उनके धाम का जहाँ पर वो निवास करते हैं उसकी सुंदरता का वर्णन है। I think either the previous verse or a couple verses afterwards, it describes that there's airplanes that are powered by mantras. आगे जाकर ऐसे कुछ लोग आएंगे जिसमें ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे वायुयान थे जो मंत्रों से चलते हैं। And describing yesterday's verse, so many varieties of deer, and describes all the different trees and the beautiful scents of the flowers and the lakes. तो पिछले श्लोक में नाना प्रकार के हिरण, वृक्ष और चिड़ियाँ और सुगंधित फूल इत्यादि का वर्णन है झरनों का। So many wondrous things are described. बहुत सारी अद्भुत वस्तुओं का वर्णन है। I was noticing even myself, I was hearing the descriptions, I was thinking, oh, I'll have to go there sometime. इतना सुंदर वर्णन है कि मैं जब पढ़ रहा था मेरे मन में ऐसा विचार आया, इच्छा हुई कि मुझे भी कभी वहाँ जाना चाहिए। Then I thought, wait a minute, I don't want to go there. नहीं, एक मिनट रुको, मुझे उधर नहीं जाना है। I got to keep focused on what my goal is. मुझे तो हमारा जो लक्ष्य है उस पे निश्चित रहना है। So we see that
even on this earth planet, तो हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर भी there's many, many beautiful and wondrous places. बहुत सारे ऐसे सुंदर और सुगम्य स्थान हैं। Sometimes we see so many signs and billboards and magazines. हम बिलबोर्ड्स में, मैगजीन में बहुत सारे ऐसे प्रस्तावनाएं पढ़ते हैं And they advertise all these places. You should come and you should visit this place. जहाँ पर ये प्रस्तावना रहती है कि आप इस स्थान पे आओ, पर्यटन के लिए घूमो फिरो। There's beautiful beaches बहुत सुंदर समुद्र के तट हैं, and mountains पर्वत हैं, and forests वन हैं and exciting cities और बहुत ही अद्भुत शहर हैं, and expansive deserts. विशाल रेगिस्तान हैं। And just by hearing these descriptions or looking at the pictures, it develops a desire for us to go there. तो जब हम ऐसे चित्र देखते हैं, उनका वर्णन सुनते हैं, तो इच्छा आ जाती है कि हम वहाँ जाना चाहिए। Therefore, they spend millions of dollars promoting so many advertisements to try to attract tourists. इसलिए जो पर्यटन विभाग है अलग-अलग स्थानों का, वो हजारों करोड़ लगाता है लोगों को आकर्षित करने के लिए कि आप आओ। And they hire models, very handsome men and beautiful women. और वो अभिनेता अभिनेत्रियों को पैसे देते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं Come, please, we want to take your picture in this place. कि हम आपको उस स्थान में आपकी एक पिक्चर लेना चाहते हैं। They tell them, okay, now smile. और फिर उनको बोलते हैं चलो अभी मुस्कुराओ। Okay. Then they go back to normal. और फिर वो अपने घर चलते हैं। Okay, smile again. फिर से बोलते हैं मुस्कुराओ। Then they go back to normal. फिर वो फिर से वैसे नॉर्मल So they put these pictures and all these descriptions and they disturb people's minds. And people think, oh, I have to work hard. I have to save up money. I have to go to this place. तो जब वो इस प्रकार के चित्र लोग देखते हैं तो उनका मन व्याकुल हो जाता, परेशान हो जाता है, इच्छा आ जाती है कि मुझे ऐसे स्थान पे जाना है, मुझे भी ये दृश्य देखना है, मुझे भी अनुभव करना है। I want to be happy like them. मैं भी उनकी तरह खुश होना चाहता हूँ। And maybe if I buy the sunglasses they're wearing, or the clothes they're wearing, or the purse they're wearing, I'll be happy. अगर मैं उनके जैसे काला चश्मा या उनके कपड़े या उनके पास जो बैग है वो खरीद लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। So just the same way these travel agents and advertising agencies, they give descriptions of these places that we haven't visited, but they tell us about it. तो जो इस प्रकार के विभागों में कार्य करते हैं, एजेंट होते हैं, इस प्रकार की चीज का प्रस्तावना रखते हैं, तो वो इस प्रकार लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। So the Shastra also lets us see things and know about places that we haven't gone and maybe we'll never go. उसी प्रकार शास्त्र भी हमें ऐसे स्थानों का वर्णन करता है जहाँ हम कभी गए नहीं हैं और शायद कभी जाएंगे भी नहीं। So just like here, the Shastra says there's beautiful places, जिस प्रकार शास्त्र हम सुंदर स्थानों का वर्णन करते हैं, beautiful deer and the birds are singing so lovely, बहुत सुंदर हिरन है, चिड़िया है जो चहक रही हैं, and the sun is shining sometimes through the trees with soft, cool breezes. सूर्य उदय हो रहा है और बहुत ही सुंदर हवा बह रही है। And we think, oh, let me go to that nice place. तो हम सोचते हैं चलो मुझे भी उस स्थान में जाना है। But then the Shastra adds more insight. लेकिन शास्त्र और कुछ बातें भी बताता है। In the Gita, we know Krishna says you can go to the highest planet in the whole universe. भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि आप इस ब्रह्मांड में सबसे ऊंचे लोक में जा सकते हो। We have that opportunity. वो अवसर भी है हमारे पास। Here it's describing the experience of the demigods. यहाँ पर देवताओं का अनुभव बताया जा रहा है। Krishna says you can become a demigod. कृष्ण बोल रहे हैं कि आप एक देवता बन सकते हो। But from whatever you do, the highest to the lowest, लेकिन आप जिस उच्चतम स्थान से नीचतर स्थान में जाकर भी चले जाओ। says they're all places of misery. सब जगह दुख। And in the Bhagavatam, Prabhupada writes in the first canto that there's like a pinprick. श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद में प्रभुपाद जी लिखते हैं जैसे कि सुई की नोक से चुभता है ना। Just like sometimes if you visit a temple or when you give a class, they give you a nice garland. जैसे कि आप कभी मंदिर जाओ, एक क्लास ले रहे हो, तो आपको एक सुंदर सी माला मिलती है।
Sometimes when they're decorating the deities, they put a pin in to hold the garland in a certain way. तो कभी-कभी जब भगवान का श्रृंगार होता है तो माला को एक प्रकार से भगवान पर सजाने के लिए कभी-कभी एक सुई लगाई जाती है। So I've had the experience, sometimes they give you the garland, but they forget to take out the pin. तो मेरा कभी-कभी अनुभव रहा है कि आपको माला पहनाते हैं लेकिन उसमें से वो सुई निकालना भूल जाते हैं। So you think, oh, nice garland, thank you. तो हम सोचते हैं बहुत अच्छी माला है। Ouch! लेकिन फिर चुभता है अचानक। Smells very good. सुगंध तो बहुत अच्छी है। Oh! लेकिन फिर चोट लगती है। It's so attractive, but there's a pin prick. लेकिन तो है आकर्षक लेकिन साथ ही साथ कष्ट भी है, चुभता भी है। One time I was even giving a class and they had some pins in the seat. एक बार मैं कहीं पर कक्षा दे रहा था, प्रवचन दे रहा था, तो जिस आसन में बैठा था उसमें इस प्रकार से पिन्स लगे हुए थे। So I couldn't move because as soon as I moved, तो मैं हिल भी नहीं पाता था, जैसे भी हिलता था तो वो झुकता था। I had to be very careful. बड़ा सावधान होकर बैठा था। So it looks like a nice seat, तो देखने में तो बड़ा अच्छा आसन था, but there's a pin prick. लेकिन फिर चुभ रहा था, पिन्स चुभ रही थी। I won't tell the whole story. मैं आपको पूरी कहानी नहीं बताऊंगा। One time, my wife and I, we won a little contest and we went to Costa Rica for what we thought would be a nice break. You know, some sun, some water, some chanting. Actually had to work on some project. Peaceful place. तो एक बार मैं और मेरी पत्नी ने सोचा कि हम कोस्टा रिका नामक स्थान में जाएंगे और वहाँ पर थोड़ा सा विश्राम करेंगे, धूप सेकेंगे, समुद्र के तट पर बैठेंगे, जल करेंगे शांति से। This is a true story. और कुछ कार्य करना था, हमें प्रोजेक्ट करना था। Beautiful beach, beautiful sunshine. बहुत सुंदर सूर्योदय होता है, सूरज की They डूबने bring होती you है। fruit drinks, so many things. तो आप समुद्र के तट पर बैठ सकते हो, जूस पी सकते हो, फल का। But the second day we were there, when we came down to have some breakfast, beautiful fruits, so many things. जब दूसरे दिन हम सुबह-सुबह नाश्ता करने के लिए, प्रसाद पाने के लिए, तो बहुत सारे अच्छे फल रखे हुए थे, सुंदर से फल। There was a sign over the fruit, and it said, "Crocodile sighted on the beach." तो वहाँ पर एक चिन्ह में लिखा हुआ था कि कुछ समय पहले यहाँ पर एक मगरमच्छ दिखा था, एक उस समुद्र के तट पर। So we asked the man, we said, well, crocodiles don't go in the ocean, right? He can't be in the ocean. Crocodiles don't go in the ocean. There's for like fresh water. तो हमने वहाँ के व्यक्ति से पूछा कि जो मगरमच्छ होते हैं वो तो समुद्र में नहीं जाते। And we asked him, so is this dangerous? तो क्या ये खतरनाक बात है कि यहाँ पर मगरमच्छ दिखाना? And the man told us, well, they're not vegetarians. तो उस व्यक्ति ने हमें उत्तर दिया कि हाँ, मगरमच्छ शाकाहारी तो नहीं होते हैं। And I asked him, I said, well, how big is this crocodile that's somewhere on the beach? तो फिर मैंने उससे पूछा कि कितना बड़ा मगरमच्छ है जो समुद्र के तट पे है। He said, well, we don't know, but I can show you a picture of the last time a crocodile was on the beach. तो मुझे पता नहीं ये कितना बड़ा है, लेकिन पिछली बार एक जब दिखा था तो उसकी फोटो हमारे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। And he showed me a photograph, and this crocodile's the mouth was like my arms. तो वो फोटोग्राफ जो दिखाया उसमें मैंने देखा कि उस मगरमच्छ का जो मुंह था वो इतना बड़ा था। They said the last one was 17 feet long. That's like the size of this carpet. 17 feet. तो जो पिछली बार दिखा था 6 meters, yeah. जो पिछली बार दिखा था वो 17 फीट लंबा था, मतलब ये जो कारपेट बिछा है इतना लंबा। So it was a very nice place, बहुत सुंदर स्थान था, अच्छा स्थान था, except there's a crocodile. लेकिन वहाँ पर वो मगरमच्छ नहीं था। And you can go to the higher planets, तो आप इसी प्रकार उच्चतर लोकों में जा सकते हो, but there's still death. लेकिन वहाँ पर भी मृत्यु होती है। You can become a very rich man, आप बहुत अमीर व्यक्ति बन सकते हो, but there's always someone trying to take your money. लेकिन हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जो आपको पैसे चुराने की कोशिश You करेगा। can become very powerful. आप बहुत शक्तिशाली बन सकते हो, There's always someone plotting to take you down. लेकिन कोई व्यक्ति होगा जो आपको गिराने की कोशिश कर रहा है। So this is the nature, Jai Shishirada Giridhari Ki Jai. So this is the nature of this material world, तो इस भौतिक जगत का यही स्वभाव है, according to the Shastra. शास्त्र के अनुसार।
And we can see ourselves, the nature of this world. There's some happiness, but there's always some distress. तो हम इस जगत के स्वभाव को खुद देख सकते हैं कि थोड़ा सुख है लेकिन दुख भी है। Just like this is Mumbai, famous for Bollywood. जैसे कि बॉम्बे शहर बॉलीवुड के लिए विख्यात है, But the Bollywood stars, one day they're famous, the next day they're finished. लेकिन जो अभिनेता अभिनेत्री होते हैं वो एक दिन तो बहुत विख्यात होते हैं और दूसरे दिन कोई उनको नहीं जानता। We were in Pune a few years ago, हम पुणे पुणे में थे कुछ वर्ष पहले, and Radhe Shyam Prabhu was giving a class, राधेश्याम में भी क्लास दे रहे थे कक्षा में। and he described that in one of the local colleges, the topper, the number one student. तो वो बता रहे थे कि वहीं पे एक कॉलेज में जो सबसे अच्छा विद्यार्थी था, So everyone is thinking, I wish I could be like that student. तो सब लोग यही सोचते थे कि हम भी उस विद्यार्थी की तरह बन सकते If हैं। I could be number one, then I would be happy. मैं भी उस अव्वल स्थान में आना चाहता हूँ जिससे कि मैं खुश रह सकूँ। But the morning we were there, तो उन्होंने कहा लेकिन एक सुबह हम आ गए, he told us just recently at this university, the top student took his life. तो हमें पता चला कि उस विश्वविद्यालय में वो जो सबसे अव्वल नंबर का विद्यार्थी था उसने आत्महत्या की। Another example, these days everyone wants the new mobile device. दूसरा उदाहरण, आज के समय में हर व्यक्ति नया से नया मोबाइल फोन चाहता है। You see here in India, even people that don't have much money, they have their mobile device. तो यहाँ भारत में हम देखते हैं कि वो लोग जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है उनके पास भी अच्छे अच्छे फोन होते हैं। I have to get the Apple 15, now I have to get the 16, then I have to get the 17. मुझे एप्पल का 15 वर्जन वाला मॉडल चाहिए, फिर 16, फिर 17। But meanwhile, the top doctors around the world, they say these things are terrible for you. लेकिन जो बड़े-बड़े डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। In UK, they have a whole, I heard, government department about loneliness. यूनाइटेड किंगडम में एक भाग है शोधन का जिसमें वो अकेलापन के ऊपर में जांच करते हैं। And in the United States, the Surgeon General, the top surgeon, he said there's an epidemic of loneliness. और अमेरिका में एक व्यक्ति है वो कहता है कि ये जो अकेलापन है ये एक बहुत ही महामारी की तरह फैल रहा है। So everyone they have to have we need our social media. We think we need our social media. हर व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे सोशल मीडिया पे जाना है प्लेटफॉर्म। But actually it becomes anti-social media. लेकिन उससे होता क्या है वो अकेलापन का ज्यादा अनुभव करने लगता है। So all these things of this world, they appear so attractive, but there's always some pinprick. तो इस संसार में हर वस्तु जो इतनी आकर्षित होती है उसके साथ में वो सुई की नोक के समान चुभने वाला भी एक अनुभव है। So therefore Krishna says in the Bhagavad Gita, he comes again and again to give us the opportunity for the real goal of life. इसलिए कृष्ण भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि वो बार-बार आते हैं हमें अवसर प्रदान करने के लिए कि हम जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसके लिए कार्य करें। But he explains in the Bhagavad Gita, we're bewildered by our desire for things that actually are not good for us. और वो बताते हैं कि हम ऐसी इच्छाओं से प्रभावित रहते हैं जो वास्तविकता में हमारे लिए अच्छी नहीं है। And we're distracted by all these things. और हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं इन चीजों से। Just like when a child is unhappy and they're crying. Little child is unhappy and they're crying. जैसे कि एक छोटा सा बच्चा शिशु वो दुखी है और रो रहा है। We see that the parent, the mother, the father, they try to distract them. Oh, look over there at the tree. They're crying. उस समय माता-पिता क्या करते हैं बच्चे को बुलाने के लिए देखो देखो उधर पेड़ में देखो इधर देखो उधर देखो। So they're distracted, then they feel okay for a little while. तो जब वो उस परिस्थिति से अपने मन को हटा करके और लगा के उनको लगता है कुछ समय के लिए कि हाँ सब ठीक है। So we're like that. तो हम भी वैसे ही We're meant to understand our spiritual identity, हम अपने आध्यात्मिक स्वभाव को समझने के लिए हमें कार्य करना to चाहिए। realize our relationship with Krishna. कृष्ण के साथ हमारे संबंध को पहचानने के लिए कार्य करना चाहिए। But we're distracted by so many things. लेकिन हम अलग-अलग चीज से भ्रमित हो जाते हैं। Therefore, it's described in this human form of life, we need to become purified. इसलिए बताया जाता है कि इस मनुष्य देह में हमें शुद्धिकरण के कार्य करना है। If our hearts and our senses and our intelligence and our mind becomes purified, then we won't be distracted by so many allurements. अगर हमारा हृदय, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि ये सब शुद्ध हो जाएंगे तो हम इस प्रकार
प्रलोभित नहीं होंगे, and so many misconceptions. जो बहुत प्रकार की गलत अवधारणाएं होती हैं। And again, Prabhupada explains, and Krishna explains so many places in Bhagavad Gita that begins with the bodily conception of life. प्रभुपाद जी और भगवान कृष्ण बार बार समझाते हैं, गीता में बताते हैं कि ये सब की शुरुआत शारीरिक चेतना से होती है। Because our mind is still thinking, if I go to the nice beach, I'll feel the sand, I'll smell the fresh air, I'll see the sun, that will make me happy. हमारा मन ऐसे सोचता है कि हम एक अच्छे से समुद्र के तट पे जाएंगे, तो वहाँ की जो बहुत ही कोमल बालू होगी, उसका स्पर्श करने से, धूप को सेकने से, मीठी हवा को का स्पर्श करने से मुझे अच्छा लगेगा। But we're meant to become purified from this. It's the purpose of human life. तो हमें इस प्रकार की सोच से शुद्ध होना है, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। And there's many different methodologies of purification. और शुद्धिकरण के बहुत अलग-अलग विधियां हैं। In the Gita, even Lord Krishna explains there's different types of yoga, different types of penance, austerities, dharma, yajnas, knowledge, so many things. भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं अलग-अलग प्रकार के योग है, धर्म है, तपस्या है, दान है, यज्ञ है इत्यादि। It's not that there's only one path. ऐसा नहीं है कि एक ही मार्ग है। Krishna himself says he's created so many different ways of people becoming purified. तो खुद बोलते हैं भगवान कृष्ण की नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार से शुद्ध होने की कोशिश करते हैं। And Arjuna keeps asking him, but you said this, but then you say that, but then you say this, but then you say that. I'm confused. अर्जुन बोलते हैं आप पहले ये बोलते हो, फिर वो बोलते हो, फिर कुछ और बोलते हो, तो मैं इस प्रकार भ्रमित हो रहा हूँ। And in the conclusion, Krishna says, just practice bhakti. तो फिर निष्कर्ष में भगवान कृष्ण बोलते हैं केवल भक्ति कीजिए। And of course, Lord Chaitanya came to especially teach us this process of bhakti yoga. श्री चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से इस विधि को सिखाने के लिए आए हैं। And Prabhupada explains, and Lord Chaitanya, the Shastra explains, it's the easiest process for this age. प्रभुपाद जी समझाते हैं, शास्त्र में बताया गया है कि इस युग में ये सबसे सरलतम विधि है। Sometimes Prabhupada would be asked about this. कभी-कभी प्रभुपाद जी से पूछा जाता है। And he would explain, if you're trying to get to the top of a big building, तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर आप एक ऊंची इमारत के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचना चाहते हो, you can walk up step by step by step, तो आप या तो सीढ़ियों से जा सकते हैं, or just take the elevator. या फिर आप लिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं। So the process given to us by Srila Prabhupada and our acharyas, it's like that elevator, the easiest, most powerful process of purification. तो जो विधि प्रभुपाद जी ने और आचार्य ने हमें दी है, वो उस लिफ्ट के समान है, जो सबसे तेज गति से हमें ऊपर की ओर ले जाती है और सबसे सरल विधि है। And Krishna is so kind. और भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं, Lord Chaitanya is so kind. श्री चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं, Prabhupada is so kind श्री प्रभुपाद जी इतने दयालु हैं that they give us a very easy कि process. उन्होंने हमें बहुत सरल विधि बताई है। Just chant Hare Krishna, केवल हरे कृष्ण का जप कीजिए, take prashadam, साधना करिए, see the beautiful form of the deity, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन offer some simple worship to the deity. कुछ सेवा अर्पण कीजिए, And of course, very important, associate with the devotees. और सबसे बहुत महत्वपूर्ण की भक्ति का संग कीजिए। So we should apply ourselves, take advantage of these opportunities. तो हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। And we should understand, Prabhupada writes in the purport of the Bhagavad Gita, even on the royal road, there's some danger. और भगवान गीता में लेकिन ये भी बताते हैं कि जो अच्छे से अच्छा रास्ता है, उसमें भी खतरा हो सकता है। Sometimes we think, well, I'm a devotee of Krishna, everything's fine, everything's perfect. कभी-कभी हम सोचते हैं हम कृष्ण के भक्त हैं, तो सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है। And sometimes we think, I'm perfect, तो हम सोचते हैं कि मैं सबसे सही हूँ, but he's not perfect. और वो सामने वाला व्यक्ति नहीं है, She's not perfect. वो भी नहीं है, None of those people are perfect, वो लोग भी नहीं हैं, but I'm perfect. लेकिन मैं सही हूँ, I'm protected. I'm protected। I'm protected. और इसलिए मैं सुरक्षित हूँ। So we learn from this story of Daksha. तो हम दक्ष की कथा से सुनते हैं, He was a big, big man. वो एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, In the whole universe, he was an important person. पूरे ब्रह्मांड में वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, He'd achieved a lot. उन्होंने बहुत कुछ हासिल भी किया, The Devas were all respecting him. देवता गण भी उन्हें सम्मान देते थे, He'd arranged this whole big, big event.
वो इस प्रकार के बड़े-बड़े कार्यों का प्रयोजन करता था। Everybody came. सब लोग आते थे। Described Brahma didn't come and Vishnu didn't come because they knew there was going to be trouble. They didn't come. ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु नहीं आए क्योंकि वो समझते हैं कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। It's like if you throw a party, जैसे कि कोई अगर व्यक्ति पार्टी they करता kind of measure your social status by who comes. तो आप जान सकते हो कि आपका सामाजिक स्तर कितना है ये देखो कि उस पार्टी में कौन-कौन आता है। Oh, he must be a big man. The chief minister came and so came, so came. अगर लोग कहें कि हाँ मुख्यमंत्री आए, ये व्यक्ति आया, वो व्यक्ति आया, तो बड़ा व्यक्ति होगा तभी तो ये सब आए। So he was a very big man. तो उसी प्रकार दक्ष बहुत बड़ा व्यक्ति था। We may think I'm a big man or big woman at the temple. मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि मैं एक बहुत महान पुरुष हूँ या मैं महान स्त्री हूँ इस मंदिर में Or in my office, या फिर मेरे कार्यक्षेत्र or in the hospital, या अस्पताल में or in my country. या फिर इस पूरे देश में। Daksha was big man in the universe. दक्ष जो था वो तो बड़ा व्यक्ति था पूरे ब्रह्मांड में। But what happened? लेकिन क्या हुआ? He became proud. वो घमंडी हो गया। So we should remember, even though we're very blessed to be in this path of Krishna consciousness, Bhakti Yoga, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हालांकि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम इस सुंदर से मार्ग पर चल रहे हैं कृष्ण भक्ति के। there's still danger if we're not careful. लेकिन फिर भी खतरा है अगर हम सावधान न रहें। And the first point, the real first point of that danger is when we become proud. और वो खतरे का जो पहला लक्षण है वो इस प्रकार से है कि हम घमंडी हो जाएं। Just like Daksha, he became proud, जैसे कि दक्ष बड़ा घमंडी हो गया। then he started committing offenses, और उस कारण से वो अपराध करने and then everything was lost. लगा। और फिर धीरे-धीरे सब कुछ खो दिया। So unless we want the head of a goat, we should try to not be proud. तो अगर हमें एक बकरी का सिर नहीं चाहिए तो हमें घमंडी नहीं होना चाहिए। Right? That's what's coming up. Daksha, he lost his head, he gets the head of a goat. दक्ष के साथ भी यही हुआ ना, उन्होंने अपना सिर खो दिया और बकरी का सिर था। So sometimes we think, oh, I'm an American, we're a very powerful country. कभी-कभी हम सोच सकते हैं मैं अमेरिकन हूँ और हमारा देश बहुत शक्तिशाली है। Or we may think, oh, I'm Chinese, we have a more powerful country. और कोई कह सकता है मैं चीनी हूँ और हम और भी ज़्यादा शक्तिशाली देश हैं। Or I'm Indian, we're having very soon the most powerful country. और या फिर हम सोच सकते हैं मैं भारतीय हूँ और हम लोग बहुत शक्तिशाली देश बनने वाले हैं। Or I went to IIT, you are less than me. मैंने IIT से पढ़ाई की है, तुम तो कहीं और से तुम। So this pride, it becomes an obstacle. तो इस प्रकार का घमंड एक बाधक बन जाता है। Same thing can happen even within our Krishna consciousness. वही चीज हमारे कृष्ण भक्ति में भी हो सकती है। If we think I'm a devotee, but they're not devotees, अगर हम ऐसा सोचने लग जाएं मैं भक्त हूँ और ये सब भक्त नहीं है, that means we didn't read the Bhagavad Gita ever. इसका मतलब ये है कि हमने अभी तक गीता को पढ़ा ही नहीं। Krishna says, explains, everyone's a devotee of Krishna. कृष्ण तो एक प्रकार से गीता में बोलते हैं कि सब कृष्ण के भक्त हैं, Just different degrees of forgetfulness. लेकिन उनका अलग-अलग स्तर है। And if I'm proud, that's the proof I'm not really understanding my position. तो अगर मैं घमंडी हो रहा हूँ तो इसका ये इस बात का प्रमाण है कि मैं अपने ही वास्तविक स्थिति को नहीं So समझता। sometimes we think I'm a devotee, कभी-कभी हम सोचते हैं मैं भक्त हूँ or sometimes we think I'm a senior devotee. और फिर कभी हम ये भी सोचते हैं कि मैं तो वरिष्ठ भक्त हूँ। Sometimes we think you came here 10 years ago, कभी-कभी हम सोचते हैं कि तुम यहाँ पर 10 साल पहले आए, 3 months, 3 महीने पहले, and 3 weeks. 10 साल 3 महीने 3 सप्ताह पहले। I came 10 years, और मैं 10 साल पहले 3 months, 3 महीना 1 week. 1 हफ्ता पहले आया। I'm senior devotee. मैं ज़्यादा वरिष्ठ हूँ। We sometimes calculate like that. तो हम कभी-कभी इस प्रकार गणना करते हैं। Or we may think I am a Srila Prabhupada disciple. या फिर हम ये सोच सकते हैं मैं प्रभुपाद जी का शिष्य हूँ, I'm special. इसलिए मैं विशेष हूँ। I'm a brahmachari. I'm special. मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए मैं विशेष हूँ। I'm a sannyasi. I'm special. मैं एक सन्यासी हूँ, इसलिए विशेष हूँ। I'm a GBC. I'm special. मैं एक जीबीसी हूँ, इसलिए विशेष हूँ। Or I'm a Bhakti Vriksha leader. I'm special. मैं भक्ति दीक्षा चलाता हूँ, इसलिए I'm मैं a विशेष हूँ। counselor. I'm special. मैं दूसरों को बहुत सुझाव देता हूँ, उनका मार्गदर्शन करता I'm a guru. I'm special. हूँ। मैं गुरु हूँ, मैं विशेष हूँ। We've seen even in our movement, sometimes devotees, they take up the service as guru. If they're not careful, they can become covered over and they can also lose their spiritual status. तो कभी-कभी हम देखते हैं कि हमारी संस्था में कोई गुरु
सेवा अपना लेता है लेकिन ध्यान नहीं देता, तो वो भी अपने आध्यात्मिक जीवन में कमी का अनुभव करता है, वो पद से गिर जाता है। So if we're thinking, I'm a senior devotee, I'm a brahmachari, I'm a sannyasi, तो अगर हम सोचें हम GBC, वरिष्ठ भक्त हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, जीबीसी हैं, then we're not understanding. then we are not. Understanding. इसका मतलब ये है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। Because Lord Chaitanya himself said, I'm none of these things. कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं इसमें से कुछ नहीं हूँ। I'm the servant of 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 the gopis. मैं गोपी के दासों का दासों का दासों का दासों का दासों का दासों का दास। That was very good. But don't get puffed up. तो प्रभु जी कह रहे हैं बहुत अच्छा कहा, लेकिन घमंड मत करते हैं। So if we think like that, if we train ourselves to think like that, तो अगर हम इस प्रकार सोचते हैं, then we can make very steady progress. तो फिर हम बहुत तीव्र गति से प्रगति कर सकते हैं। Otherwise, it's just another distraction of the material world. नहीं तो हम इस भौतिक जगत में भटक सकते हैं। The Lord Chaitanya said we should actually think of ourselves. It's interesting. He gave this specific instruction, well, how we should think of ourselves. श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें अपने बारे में कैसे सोचना चाहिए उसके लिए एक बहुत विशेष आदेश दिया। Did he say we should think, oh, I'm GBC, क्या उन्होंने ऐसा कहा कि हमें सोचना चाहिए मैं एक जीबीसी हूँ, I'm sannyasi, मैं एक सन्यासी हूँ, I am senior devotee, मैं एक वरिष्ठ हूँ, I am counselor? मैं दूसरों को शिक्षा देता हूँ, मार्गदर्शन। Is that what he said? क्या उन्होंने ऐसा कहा? He said, no, we should understand we're lower than the straw in the street. उन्होंने नहीं ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम जो सड़क पे तृण होता है हम उससे भी नीचे हैं। Otherwise, we're an illusion. अगर हम ऐसा नहीं सोचते हैं तो हम भ्रम में हैं। Bhaktivinoda Thakur said if our bhakti is influenced by these things, श्री भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं कि अगर हमारी भक्ति इन भावों से प्रभावित है we just become a disturbance to society. तो हम समाज में केवल उपद्रव मचाने के एक निमित्त बन जाते हैं। So we're not meant to be a disturbance in society, we're meant to uplift society. तो हमें समाज में उपद्रव नहीं मचाना है, हमें समाज को ऊपर उठाना है। So I'm meant to see myself as lower than the straw in the street. मुझे अपने आप को जो सड़क पे तृण है उससे नीचे देखना है। How am I supposed to see others? लेकिन मुझे दूसरों को कैसे देखना है? That's very easy to understand. बहुत सरल है समझने के लिए। So many of us here, we have been initiated. आप में से कितने हैं जो दीक्षित हो चुके हैं? Or we know devotees that have been initiated. और हम जानते हैं जो दीक्षित हो चुके हैं। When you get initiated, you're permanently given an understanding of your position. जब आपकी दीक्षा हो जाती है तो आपको बताया जाता है कि आपका वास्तविक स्थिति क्या है, आपका पहचान क्या है। Because whatever name we have the same last name. हमारा कुछ भी नाम क्यों ना हो दीक्षा के टाइम, लेकिन उसके बाद में एक शब्द है जो सबके नाम नाम है। Maybe you were a Bhattacharya, or you were a Sharma, or you were a Patel, or you were this or that. आप चाहे भट्टाचार्य हो, पटेल हो, शर्मा हो, ये हो, Or a Smith, or a Jones, or a Walker, or so many things. या स्मिथ हो, जोन्स हो, वाकर हो, कुछ भी हो, But now you are Das. लेकिन अभी आप दास हो। So we're meant to see ourselves as lower than the straw in the street, as Das, तो हमें अपने आप को सड़क पर तृण से भी नीचे समझना है और एक दास के रूप में देखना है। so if I'm Das, who's everyone else? तो अगर मैं दास हूँ तो बाकी सब क्या है? Who's everyone else? बाकी सब क्या है? Prabhu, the boss. Nice. Yes. तो प्रभु जी ने कहा वो बॉस है या स्वामी है, प्रभु है। I'm Das, you are Prabhus. मैं दास हूँ और आप सब प्रभु हैं। So it's very different than materialistic perspective. लेकिन जो भौतिक विचारधारा होती है बिल्कुल अलग है। In material consciousness, everyone wants to be on the top. भौतिक चेतना में व्यक्ति सबसे ऊपर होना चाहिए। Spiritual life, we want to be the servant of the servant of the servant. आध्यात्मिक जीवन में आप दास होकर दास को दास होते And as Lord Chaitanya said, we should be strict with ourselves. As Prabhupada said, we should be strict with ourselves, but very forgiving and flexible with others. हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि हमें अपने आप के साथ में बहुत कठोर होना चाहिए, लेकिन दूसरों के साथ में बहुत दया दिखानी चाहिए।
and try to remember and try to practice, and gradually becomes realized that actually we're the servant of everyone. तो ऐसे हम अगर स्मरण करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तो हमें ये चीज़ का अनुभूति होगा कि हम वास्तविकता में सबके दास हैं। I know sometimes myself, when I'm in a new situation, I get a little confused. Well, how do I fit in? What am I supposed to do here? जब मैं कोई नई परिस्थिति में आता हूँ, मैं थोड़ा सा भ्रमित हो जाता हूँ कि मुझे इस स्थान में कैसे कार्य करना है, क्या करना है। And I try to remember, sometimes I hear a little voice or something. तो मैं फिर मुझे एक अंदर से आवाज़ सुनाई देती Just says, it's easy, but your position is here. है। तो वो आवाज़ ये होती है, इस स्थान में तुम्हारी क्या परिस्थिति है, तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान की, ये सब समझना सरल है। There's no confusion. इसमें कोई परेशानी You're a नहीं है। servant. तुम यहाँ पर इस स्थान में भी एक दास हो। Just be a servant. इसलिए एक दास रहो। Do what needs to be done. वो करो जो करना है। Help what needs to be helped. उसकी सहायता करो जिसकी Respect everyone. सबका सम्मान करो। And try to accept whatever service Krishna blesses you with. और जो भी सेवा कृष्ण आपको दे रहे हैं उसकी स्वीकार करो। So if we think like that, तो हम अगर ऐसा सोचते हैं, then we please our gurus, तो हम अपने गुरुजन को प्रसन्न we please the Lord, भगवान को प्रसन्न करते हैं, we please the Vaishnavas, भक्तों को प्रसन्न करते हैं, we make rapid advancement, हम बहुत तीव्र गति से प्रगति करते हैं, and we can actually have an impact on the world around us. और फिर हम उससे अपने वातावरण पर एक प्रभाव छोड़ सकते हैं। But to the extent we allow pride to come in, लेकिन अगर हम जितनी मात्रा में अपने अंदर घमंड आने देंगे, it blocks our progress. तो हमारी प्रगति में बाधा आएगी। It blocks the examples that we can set. हम जो एक अच्छा उदाहरण स्थापित कर सकते थे उसको रोक देता है। And as we've seen in our society as well as the world at large, it can be the pathway to illusion again. तो और जैसा हम देखते हैं हमारे संस्था में भी और पूरे जगत में भी, जब व्यक्ति इस प्रकार घमंडी हो जाता है तो फिर वो मोह या भ्रम के मार्ग में चलना शुरू करता है। So many courses you can take now in Krishna consciousness. आप आज के समय में कृष्ण भक्ति में बहुत सारी पढ़ाई कर सकते हैं, So many seminars, बहुत सारे सेमिनार, so many retreats, रिट्रीट में जा सकते हैं, so many certificates. आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स I took this class, this class, this class. मैंने ये कोर्स अटेंड किया, ये क्लास अटेंड की। Those are all very nice, very beautiful, wonderful. तो ये बहुत अच्छी बात है। But in the Bhagavad Gita, लेकिन गीता में Krishna says if you actually have knowledge, कृष्ण बोलते हैं अगर आपका सच में ज्ञान है, he doesn't say if you have knowledge, you have 17 certificates. वो ये नहीं बोलते कि आपके पास ज्ञान है तो आपके पास 17 सर्टिफिकेट। He doesn't say you went to this retreat, this seminar, that seminar. He doesn't say that. वो ये भी नहीं बोलते कि आप इस रिट्रीट में गए, उस रिट्रीट में गए, आपने इस सेमिनार में भाग लिया, उस सेमिनार में। He says if you're humble, तो ये बोलते हैं कि आपने ज्ञान है तो आप नम्र रहो। then you have knowledge. That's the first आपके पास principle. ज्ञान है। ये So पहला गुण है। We should try. Take some time. We should try. तो इस प्रकार हमें समय लेना चाहिए, लेकिन इस चीज का अभ्यास करना चाहिए। So we have time for questions or comments from anyone? प्रश्न है किसी का? I can't see him, but I saw his hand. He's got some aura coming off the building next door. Probably my question is how to balance self-respect compared to humility. How to balance our self-respect with humility. Well, self-respect, if we understand, if we study the word, how to respect ourself is part and parcel of Krishna. And ourself is eternal servant to Krishna. And ourself is the servant of everyone else. So we can respect that. It's important. It's not that I have no value. I have tremendous value as long as I remember what's my value, which is to serve others. So to the extent that I'm trying to serve others and I'm trying to act as a humble Vaishnava, I should respect myself, take care of my needs. But if, sorry. तो उनका प्रश्न ये है कि आत्मसम्मान और नम्रता में हम अंतर कैसे जानें? प्रभु जी बोलते हैं कि आत्मसम्मान का अर्थ ये है कि हम अपनी पहचान जानें कि हम कृष्ण के अंश हैं, हम कृष्ण के सेवक हैं, सभी अन्य भक्तों के सेवक हैं। तो हम इस पहचान के लिए अगर कोई कार्य करते हैं या सोचते हैं कि मुझे अपना ख्याल में रखना है, मुझे कोई वस्तु चाहिए, मुझे कुछ करना है अपने लाभ के लिए, जिससे कि मैं इस पहचान को बना सकूं, तो वो आत्मसम्मान है। और इसमें और नम्रता में कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है।
So part of it too is that if we respect ourselves, we keep ourselves out of trouble. keep ourselves. We keep ourselves out of trouble. तो जब हम आत्मसम्मान करते हैं तो हम अपने आप को बेकार की परेशानियों से दूर रख पाते हैं। I'm understanding I'm a very small jiva soul, मैं समझ पाता हूँ कि मैं बहुत ही क्षुद्र एक जीव आत्मा हूँ and the material energy is very powerful. और जो माया शक्ति है बहुत प्रभावशाली है। So if I respect myself as well as material energy and of course Krishna, तो अगर मैं अपने आप का सम्मान कर रहा हूँ और साथ ही साथ इस भौतिक शक्ति का और कृष्ण I'm going to also avoid those things and those places that can pull me down. तो मैं उन चीजों से बचकर रहूंगा जो मुझे नीचे गिरा सकती हैं। I have to respect my own limitations. मुझे अपनी सीमाओं को भी समझना होगा। Is that okay? You ladies have any questions? माताओं में प्रश्न है? Anybody else? There? और कोई प्रश्न है? We have 3 minutes. हमारे पास 3 मिनट और हैं। We can sit here and practice Mona or we can ask a question. या तो हम मौन बैठ सकते हैं 3 मिनट के लिए। Yes, thank you. या प्रश्न पूछ सकते हैं। We heard earlier this, we have heard this before many times that we need to be highly it is only when situations come that we realize that am I really thinking that way? So how can we try to practice that? Any tips on that so that we can truly be like that instead of when the situations come and how do we practice? We hear it many times, but तो उनका ये है कहना कि हम ये तो आप जो बता रहे थे क्लास में बार-बार सुनते हैं कि हमें ऐसे सोचना चाहिए और हम कोशिश भी करते हैं लेकिन हो नहीं पाता तो हमको कुछ सुझाव दीजिए हम कैसे अच्छे से कर सकते How do you understand where we are? Isn't there any dream? हैं और well, we know where we are. हमें ये भी कैसे समझना है कि हम वास्तविकता में कौन से स्तर पर हैं कि कभी-कभी हमें भ्रम हो सकता है। It's Kali Yuga. It's Kali Yuga, प्रभु जी बोले हमें पता है हम कहाँ हैं कि कलयुग चल रहा है and I am still here. और हम अभी भी कलयुग में ही हैं Anyone with any intelligence got out a long time ago. और जो लोग बुद्धिमान थे वो तो बहुत पहले कलयुग से निकल गए We know where we are. I'm spirit soul, और हम जानते हैं हम कौन हैं हम जीव आत्मा हैं। but I'm in a body that's full of blood and urine and stool and all those things that we know is there. और हम इस शरीर में हैं जिसमें रक्त है मल है मूत्र है और क्या क्या है So where we are is not so good. तो ये बहुत स्पष्ट है कि हम जहाँ पर हैं वो अच्छा स्थान है I mean, the opportunities are wonderful. Krishna's here. The holy name is here. One lifetime, Prabhupada said we can go back to Krishna. So the opportunity is wonderful, but the situation is difficult. तो अवसर तो बहुत अच्छा है कृष्ण है हरि नाम है प्रभुपाद जी ने ये भी कहा है कि इसी एक जीवन में कृष्ण के पास वापस लौट सकते हो तो अवसर तो बहुत अच्छा है लेकिन जो परिस्थिति है वो थोड़ी सी बेकार है So just a quick answer to your second part of your question. How do we understand it? How do we practice it? तो आपके प्रश्न ये है कि हम कैसे इस चीज को समझे या इसका बार-बार अपने आप को याद There's, दिलाएं there's a very nice story in the early days. शुरुआती दिन से एक बहुत अच्छी कहानी है Gargamuni Prabhu, who was Brahmananda, later Maharaj's brother, गर्गमणि प्रभु जो ब्रह्मानंद प्रभु या महाराज के भाई devotees were just starting to pay obeisances. They didn't understand paying obeisances yet. उस समय इस कौन में भक्तों को प्रणाम करने का महत्व नहीं पता था तो उन्होंने बस शुरू ही किया था प्रणाम करने की जो प्रणाली है भक्तों को In India, of course, it's part of the custom, culture. तो भारत में तो ये संस्कृति है लोग जानते हैं प्रणाम करना But in the West, it was a new thing. लेकिन विदेश में ये नहीं बात थी। Bowing down to offer respects, especially to Prabhupada. तो ऐसे झुककर प्रणाम करना प्रभुपाद जी के सामने So Gargamuni went to Prabhupada. He said, Swamiji, तो गर्गमणि प्रभु प्रभुपाद जी के पास
They called him Swamiji in those early days. उन दिनों प्रभुपाद जी को स्वामी जी बोलते थे। He said, the others, they're bowing down like that, but I don't feel like it. तो प्रभुपाद जी को उन्होंने कहा सब लोग ऐसे प्रणाम करते हैं आपको, ये मेरा मन नहीं करता। And Prabhupada said, that's okay if you don't feel like it, बात ये ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा मन नहीं करता, but you should still do it. लेकिन मन नहीं करता फिर भी तुम्हें करना चाहिए। And if you do it, the feeling will come. और तुम ऐसे करते रहोगे तो फिर प्रणाम करने में मन भी लग जाएगा। So we may not feel humble. इसका मतलब अभी हमें ऐसा लग सकता We may है not, कि हम नम्र नहीं हैं। we may not feel like servants. हमें ऐसा भी लग सकता है कि हम दास नहीं हैं। We may not feel like serving others. हमें दूसरों की सेवा करने का मन भी नहीं होता हो। We may not feel like chanting. हमें जप करने का मन ना हो। We may not feel like dancing. हमें नृत्य करने का भी मन ना करे। But if we practice it, the feeling will come. लेकिन अगर हम ऐसा अभ्यास करेंगे तो धीरे-धीरे वो भावनाएं आना शुरू हो जाएंगी। That's the answer Prabhupada gave. ये उत्तर प्रभुपाद जी ने दिया। We should practice and humility will come. तो अभ्यास करेंगे तो अभ्यास के साथ में नम्रता भी आ जाएगी। Okay? Okay. So just invite anyone who would like to come this afternoon. There's a special sangha for the ladies, 5 o'clock. It's in English, right? Yeah, probably translation there. ट्रांसलेशन। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि आप सभी को निवेदन है, विशेषकर माताओं को शाम को 5 बजे भक्तिवेदांत का हॉल में एक क्लास है माताओं के लिए और उसका हिंदी में अनुवाद भी होगा 5 से 6:30। Okay. And just so the men don't feel left out, और ताकि पुरुषों को ऐसा न लगे कि हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। there's also a seminar tonight and you're all invited. और इसलिए उनके लिए भी एक सेमिनार है शाम को, आप सबको बुलाया जाता है। The ladies are also invited, उसमें माताओं को बुलाया जाता है, both. दोनों को बुलाया जाता है। No discrimination for the 7 o'clock seminar. तो जो 7 बजे का कक्षा है उसमें कोई भेदभाव नहीं है। Also at the Bhaktivedanta Hall, वो भी भक्तिवेदांत भवन है, 7 to 9, 7 से 9। about how we can improve devotee relationships. कैसे हम भक्तों के साथ अपने संबंध को It's सुधार a very interactive seminar. तो इसमें वार्तालाप होगी, उस प्रकार का प्रणाली रहेगी सिखाने Everyone participates. और हम उसमें भाग लेंगे। Okay? Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। Srila Prabhupada ki jai. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much. We are very grateful कि प्रभु जी आए हैं और हमें आज बहुत महत्वपूर्ण चीज जो हमारा दासत्व क्या होता है और किस तरीके से हमें भूलना नहीं चाहिए, किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिकल टिप्स भी विद एग्जांपल्स भी बताएं। हम सब जो दीक्षा लिए हैं, जो इंस्पायर हो रहे हैं आपके नृत्य का, तो इसको प्रैक्टिस करें। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ प्रभु जी ने हमें शिक्षा दिया है। तो उसका अगर हम प्रभु के लिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो हम उसको प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करने के लिए सब लोग मिलके एक बार हरे कृष्ण प्रणाम से प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनफैक्ट प्रभु जी श्रील प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्यों में हैं एंड ही इज ए बीटीसी एंड हमारे कम्युनिकेशन का जो अध्यक्ष हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं और पूरा विश्व के अंदर प्रचार करते रहते हैं। और आज शाम को बहुत महत्वपूर्ण सेमिनार्स हैं वैष्णवीज के लिए। अखिलेश रुक्मिणी माता जी हैं, उनके मार्गदर्शन पे अटेंडिंग ध्यानपूर्वक कवर किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इसके ऊपर माता जी को हम लोग शिक्षा ले सकते हैं। विशेष रूप से ये माताओं के लिए 5 to 6 डेफिनेटली अटेंड करें। उसके बाद ये सबके लिए
जो बच्चों के बीच में आदान प्रदान कैसे होना चाहिए, व्यवहार कैसे होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये 7 to 9 o'clock प्रभु जी के मार्गदर्शन पे हम लोग सब शिक्षा पाएंगे। तो आप सब लोग आए, अपने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बुलाएं, सबके लिए भी प्रसाद देते हैं। हरे कृष्ण। Who was invited to take the shot? I think it's some of the ladies. So I'll just go with you. I'm not sure what तो हमको इसका पूरा फायदा लेना चाहिए, क्योंकि वो लोगों ने